Artificial neural networks. Artificial neural networks, this is an information processing paradigm which are inspired from biological neural network systems. Biological neural networks जो human body में या किसी भी living organism के body में जो biological networks पाए जाते हैं, they have an amazing design they have, and they have the ability to process information, to integrate the information and to show a response against a certain stimuli. So we can say that they have the ability to solve different types of problems in different scenarios, so they have the plasticity. Now, based on their inspiration from these biological neural network systems, the scientists have designed artificial neural networks, and their working mechanisms are more or less similar based on the logics of these biological neural networks. So basically, that's why we say that there is an information processing paradigm which has been inspired from the biological neural networks. The key elements of these artificial neural networks is the novel structure of information processing system. इनके मुकाबले में जो बाकी different types के जो algorithms है या जो systems है जो information processing के लिए use होते हैं, neural networks का एक novel structure है information processing के लिए, and that's why that novel structure of information processing system makes these artificial neural networks different from other counterparts in the same paradigm. So they have the ability to solve different types of problems with much ease, with high accuracy as well. They're composed of basically a large number of interconnected processing units, and these interconnected processing units, they are called as neuron. And the same terminology being used as in biological neural networks, because the biological neural networks are made up of the biological neurons. So here the neurons are the processing units of these artificial neural networks, and they have the processing ability based on the logic inspired from the biological neural networks. And all these processing units of the artificial neural networks, which are interconnected with each other, they work in integration with each other to solve a specific problem or to solve a specific task. So there is an integration of all these multiple processing units in these artificial neural networks. Artificial neuron को अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो चूंकि ये जितना भी artificial neural network है, this is basically integration of the artificial neuron. So we have to define what is basically this artificial neuron is. जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन है उसकी डेफिनेशन हमने पहले मॉड्यूल्स में हम कर चुके हैं कि जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन होता है उसकी एक बॉडी होती है जिसको हम सोमा कहते हैं, कुछ डेंड्राइड्स होते हैं, एक्सॉन होता है, उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं. इस तरह जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन होता है इसकी भी मोर और लेस वही आर्किटेक्चर होता है. So we can say that this artificial neuron is a device basically, and this device is composed of it can input multiple inputs at the same time and process all those receiving inputs and will show only a single output against all the multiple inputs received by the dendrites of this artificial neuron. So this device is basically receiving multiple inputs at the same time, and all these inputs they may be the same inputs, or these inputs may be of different types with different weights. So they are receiving multiple inputs, process them, and show single output against all these multiple receiving inputs. The neuron, artificial neuron, they have 2 modes of operation. One mode is basically the training mode, and the other mode is basically the using mode. So an artificial neuron will have 2 modes of operation, the using mode and the training mode. So there will be 2 modes of this artificial neuron. अगर हम हाई लेवल आर्किटेक्चर की बात करें तो जो न्यूरल नेटवर्क है दैट कंपोज्ड ऑफ 4 कंपोनेंट्स बेसिकली, एंड द 4 कंपोनेंट्स इंक्लूड नंबर 1 द न्यूरॉन. दे विल कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन, क्योंकि न्यूरॉन के बगैर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का कंसेप्ट हो नहीं सकता. सो दिस इज़ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द artificial neural network. The second component of this neural network is the topology of the network. Topology में
हमारे पास उसकी जो कनेक्टिविटी पाथ्स है, जो मुख्तलिफ न्यूरॉन्स के आपस में जो कनेक्टिविटी पाथ्स बनते हैं, दिस इज़ बेसिकली इट्स मेकिंग द टोपोलॉजी ऑफ द नेटवर्क. सो दिस इज़ द सेकंड कंपोनेंट. द थर्ड कंपोनेंट इज़ बेसिकली द वेट्स, बिकॉज जितनी भी इनपुट्स आते हैं वो इनपुट्स के वेट्स होते हैं, या जो उनके कनेक्शंस होते हैं उनके कनेक्शंस के भी वेट्स होंगे. सो देयर विल बी वेट्स which will be assigned to them, and these weights are very, very important in the processing of the system. So that's why they make the third component of the neural network system. The fourth component of this neural network system is the learning algorithm, because it's using a learning algorithm. Biological नेटवर्क्स जो है उनमें ये एबिलिटी है कि जब भी वो कोई डेटा प्रोसेस करते हैं, जब कोई स्टिमुलस के अगेंस्ट कोई रिस्पांस शो करते हैं, तो एवरी टाइम दे लर्न फ्रॉम द प्रीवियस एक्सपीरियंस. इसी तरह जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क सिस्टम्स है वो भी अपने प्रीवियस एग्जांपल से, प्रीवियस एक्सपीरियंस से दे लर्न और अपने मेमोरी में चीज़ें रखते हैं. सो दैट्स वाई लर्निंग एल्गोरिदम वो यूज़ करते हैं, और जो लर्निंग एल्गोरिदम होता है वो ये एबिलिटी प्रोवाइड करती है न्यूरल नेटवर्क को कि वो लर्न करे या उसकी ट्रेनिंग हो. सो ट्रेनिंग या लर्निंग क्या होगी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट फॉर दिस टाइम दिस इज़ द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ दिस द न्यूरल नेटवर्क सिस्टम. They are using the learning algorithm, which makes the fourth component of the network system, neural network system. जो भी न्यूरल नेटवर्क होगा उसको अगर हम जनरलाइज आर्किटेक्चर को देखें तो दिस न्यूरल नेटवर्क विल हैव डिफरेंट लेयर्स बेसिकली. अगर हम उनके लेयर्स को डिवाइड करें, सो वी कैन डिवाइड द लेयर्स of the neural network into three different types of layers. Number one, there is an input layer and there is an output layer. Input layer जो कि input ले रहा है, और आउटपुट लेयर वो है जो आउटपुट शो कर रहा है, जो प्रोसेसिंग के बाद, जो डिसीजन मेकिंग के बाद, जो अगेंस्ट द स्टिमुलस जो भी उस टास्क को सॉल्व करने के लिए जो रिस्पांस शो होगा वो आउटपुट लेयर शो करेगा. एंड द थर्ड लेयर इज़ बेसिकली द हिडन लेयर. और हिडन लेयर जो होता है वो प्रोसेसिंग में बेसिकली इन्वॉल्व होता है, और ये बीच में हमें नज़र नहीं आता. इनपुट इनपुट ले रहा होता है, आउटपुट आउटपुट दे रहा होता है, और बीच में जो हिडन लेयर होते हैं वो प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होते हैं. एंड दिस इज़ आल्सो the most important layer of the system. Now the input layer is basically इसकी क्या ड्यूटी है. So the activity of the input units represents the raw information that is fed into the network. So this is the input layer. जो hidden layer है, the activity of each hidden unit is determined by the activities of the input units and the weights on the connections between the input and the hidden units. And the third layer, the output layer, the behavior of the output units depends on the activity of the hidden units and the weights between the hidden and the output units. So different layers, पूरे network system में different layers होंगे which can be divided into these three types of layers in the artificial neural network system. Now the question arises that how many number of layers will be there in the neural network system. So the number of layers and neurons depends upon the specific tasks to be answered or the specific questions to be answered. So depending upon the scenario, the number of layers will be defined. So कोई hard and fast rule नहीं है कि इतनी layers होनी चाहिए. The number of neurons and the number of layers may be depend upon the specific type of the scenario. Weights कैसे assign होंगे? Initially the weights may be assigned randomly. आम तौर पे they are assigned in the range. For example, there may be weights may be assigned in the range from -1 to 1, or from -0.5 to 0.5 positive 0.5. So initially randomly इस तरह से weights assign होते हैं, और फिर जैसे जैसे processing होती है मुख्तलिफ cycles में weights की adjustment भी हो सकती है to reduce the error rate. Now there are two types of neural networks. Number one type is the fixed network, and number second type is the adaptive network. Fixed network वो होता है कि जहाँ पे weights जो होते हैं वो fixed होते हैं, वो change नहीं होते. जबकि adaptive network में weights जो होते हैं वो accordingly मुख्तलिफ cycles में to reduce the error वो weights change होते रहते हैं, और that's why they're called adaptive networks. Now from the design and architecture and the processing abilities of the neural networks, they are best suited and they are best to identify patterns in the data, to predict different types of solutions for complicated problems. They are well suited for predictions and forecasting, and they are well used nowadays in these forecasting and prediction problems. Basically,
they are well in use in sales and forecastings, in marketing, in business, in data validation, in risk management. और अगर हम biological sciences की बात करें या biomedical sciences की बात करें तो they are also used for the predictions of diseases and from different types of scans. Image recognition में use होते हैं, जो intelligent devices बनाए जाते हैं उनमें use होते हैं. So they have a very huge variety of uses they have in real world. जो modern era है उसमें जो artificial neural networks है they are used in majority of different types of problem solving systems. जो 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 कि मार्केटिंग से रिलेटेड है या बायोलॉजी से रिलेटेड है या डिजीज से रिलेटेड है, किसी भी फील्ड में they are well suited for these types of forecasting and prediction problems.